All right. So, Arinil, where are you from? Sir, I am from West Bengal, Howrah. Okay. And did you give J? Yes, sir. I give. Did you write J Advanced? Yes, sir. How much are you expecting? Sir, around 140. 140. Okay. Great. Okay. Given a choice between a JEE seat and ISI, which one would you prefer? I say sir. Why? Sir, actually, I love maths more than physics or chemistry. Okay. Um, this love, especially maths and stats is my preferable choices over any other subject. So Okay. that's why. And why do you want to pursue mathematics and not engineering? Sir, actually, I started preparing for Olympiads since class 9 or 10. Hmm. So from that time, I was not so much accustomed to the maths, but with time, I realized its secrets, and it was truly an amazing journey with maths. And I don't feel that much I don't feel that much satisfied with subjects like physics or chemistry. I mean, like some topics of physics, but don't like the subject actually, whole subject. Basically, so. Okay. Did you write INMO? Any No, year? sir. RMO लिखा था, RMO कौन सी year लिखा? 2019. Okay. What are the favorite topics in mathematics, Arinil? Sir, calculus. Okay. So we'll start with a question. So fx is equal to x cube minus 3x minus 1. Comment about the roots. One is rational, irrational. Uh, One is real, non-real. So how many real, how many non-real, how many rational, how many irrational roots? Sir, it will have surely have one positive real root, Okay. and wait. So it will have three real roots, Okay. one positive and two negative real roots. Hmm. Uh, and sir, one root, the positive real root is greater than one, and minus one lies between the two negative real roots. Okay. So did you use calculus? Actually, I use the maximum minimum concept and the thing that IVT or something. Okay. Perfect. Uh, What about this rational, irrational? Sir, all the roots are irrational because if suppose it have any rational root p by q, then by rational root theorem, p divides minus 1 and q divides 1. So the p and q are plus minus 1. But if we put this, the root, मतलब plus 1 and minus 1 is the roots नहीं है clearly. Hmm. इसलिए सारे roots irrational. Okay. So एक क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन आर्यनल. अगर एक रूट p प्लस रूट q की फॉर्म का है तो दूसरा p माइनस रूट q की फॉर्म का होगा. सो क्या क्यूबिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स और रैशनल कोएफिशिएंट्स कैन दे हैव थ्री इरैशनल रूट्स? Three rational roots. Irrational roots occur in conjugate pairs. Can an equation having rational coefficients have three irrational roots? Sir, that वही तो प्रूफ किया अभी x cube minus 3x minus 1 का. मतलब that's what I proved now, right now. मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या किसी क्यूबिक के तीन इरैशनल रूट्स हो सकते हैं? गिवन दैट irrational roots always occur in conjugate pairs, क्या किसी क्यूबिक विद रैशनल कोएफिशिएंट्स के तीन इरैशनल रूट्स हो सकते हैं? सर मतलब
एक रूट का कॉन्जुगेट मतलब सपोज एक रूट का इरेशनल पार्ट तो इरेशनल पार्ट बाकी दो रूट के इरेशनल पार्ट मिलकर नलिफाई कर सकते हैं, तो फिर पॉसिबल है। ओके, सो अगर इसका एक रूट p प्लस रूट क्यू की फॉर्म का है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा या नहीं होगा अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है? विल दिस बी द अदर रूट नेसेसरीली, यस और नो? नेसेसरली ये मतलब हर वक्त ये नहीं होगा, कभी कभी नो हो। So you are saying p plus root q can be a root, but p minus root q may not be the root. हम यहाँ पे एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। Yes, like given here in the question. एनी क्यूबिक कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, उसमें डिस्कशन हो रहा है। If one of the root is p plus root q, will the other be p minus root q? Yes or no? Or may not be? Maybe, may not be. Sir, may not be. Okay. कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? एक क्यूबिक बताओ जिसमें एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा 2 माइनस रूट 3 नहीं है, बट कोएफिशिएंट्स रैशनल है. So try to form a cubic where one of the roots is 2 plus root 3, the other root is not 2 minus root 3, and the coefficients are rational. Okay, sir, can we move to other question? Yes, yes. है ना? So अरविंद इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं. Yeah. We can have this discussion in our next interview, second round interview. Yes. Okay, so I will give you a question based on some infinite series. I think you are comfortable with these type of questions. Yes, sir. Okay. So question is that you are given double summation a equal to 1 to infinity and b equal to 1 to infinity. ठीक है? And a into b upon a plus b factorial. You have to find this s. Arvind, can you tell about your thoughts? Sir, actually, I was trying to fix A and then trying to form a GP kind of thing. So, actually, the only thing I know about infinite series that is GP. So, trying to form like that. But with this with this factorial in the denominator, can you expect this to be a GP? Because if a, b, they will increase, then numbers will be 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. So how can they become GP? Sir, then there will be three cases separately that A greater than B, A equals to B, and A less than B. The A greater than B and A less than B are symmetric cases. So if we count for one thing, then we multiply 2. And then for that case, we have to count, and for A equals to B, we have to count. Okay. Should I give you a hint? Can we convert this into single summation by taking some n factorial in the denominator? Like if you think that this a plus b will be equal to n factorial, then in how many ways it is possible? Like your a can be 1. Yes, Then 1 b has, and n minus 1. b has to be n minus 1. If a is 2, b has to be n minus 2. And this 2 n minus 1. Okay. I think these are the total number of ways in which you will be having n factorial in the denominator. Yes, sir. And n And running now, from 2 to infinity. yeah, n is turning from 2 to infinity exactly. I think it will become easy, means maybe doable, you can say. Minus 2n minus 1 into by 6 into n minus 2 whole factorial. So वहां से टेलीस्कोपिंग some type पर लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? n minus 2 ऊपर के n को समथिंग n minus 2 plus 2 फॉर्म के लिख के टेलीस्कोपिक टाइप पर फॉर्म लगा के. Okay. क्या तुम्हारा है final summation? Can you please tell me after simplification? Sir, 1 minute please.
सर डूइंग 1 मिनट। अप्रोच बता दो या कहाँ पर स्ट्रक हो वो बता दो अनिल। सर मुझे आया है कि n by 2 into n minus 2 whole factorial, n by 2 into n minus 2 whole factorial डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में n by 2 into n minus 2 whole factorial ठीक है minus 2n minus 1 2n minus 1 2n minus 1 ब्रैकेट में 2n minus 1 by 6 into n minus 2 whole factorial, इसका समेशन 2 to infinity। तो ये n minus 2 फैक्टोरियल तो एलसीएम ले सकते हैं ना फिर हम। हाँ हाँ ठीक है 3n minus, तो आई थिंक यू हैव गॉट इट करेक्ट। या दिस इज सेम कैलकुलेशन आई आल्सो गॉट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, व्हाट इज दिस 1 upon n फैक्टोरियल? 1 upon sigma 1 upon n फैक्टोरियल, n is from 0 to infinity. What is this thing? ऊपर की चीज तो n minus 1 हम लिख के उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो नहीं सर कुछ और पूछ रहे हैं अभी। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज दिस n equal to 0 to infinity 1 upon n factorial? What is this? Can you recognize this thing? E. Hello. हाँ सर E. So can you make use of this thing here also? Can't we write this as n minus 2 plus 3? यस सर। So n minus 2 plus 3 if you are writing, I think it will become kind of this sigma only, na? हाँ सर ऊपर हाँ यस सर 6 n minus 3 factorial plus 3 upon 6 into n minus 2 factorial summation. Here for n is equal to 2 will not have any meaning, so it will up start to from equal to 3 थे। हाँ तो e by 6 plus 6 e by 2 e by 2 is correct. ठीक है, I think these based on expansion, ISI has asked many times questions, no? Like log, expansion of log e power x. So you should keep in mind these things also. yes ठीक है, but I think given a hint he was able to progress. Yes. So that is a good thing. If given a push you're able to do. So I think it was okay. The only thing is starting में तुमने एक चीज बोली थी, और एक वो एडवाइस रहेगा कि when you said कि मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, उससे बेटर है कि बोलो कि मैथ्स ज्यादा अच्छा लगता है। डोंट कमेंट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट? तो वो नेगेटिव होता है, राइट? सो डोंट डू दैट कि मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता या केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता। बस इंस्टेड बोलो कि मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स ज्यादा अच्छा लगता है। आई हैव मोर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। ओके सर राइट, सो एक तो ये है। अदरवाइज उसके अलावा तो ये है, व्हेन यू सेड कैलकुलस तो यू कुड बी मोर स्पेसिफिक। अगर तुम्हें इंटीग्रल कैलकुलस अच्छा लगता है तो इंटीग्रल कैलकुलस बोलो, डिफरेंशियल अच्छा लगता है तो डिफरेंशियल कैलकुलस बोलो। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर तुम कैलकुलस बोलोगे और बाय चांस तुम्हें इंटीग्रल नहीं आता और इंटीग्रल से उन्होंने पूछ लिया, तो फिर तुम बाद में बोलो कि सर मुझे तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा था मैं, दैट वुड बी रॉन्ग। ओके सर ठीक है, बाकी सुंदर सर एक बार। नहीं सर, मैं एक्चुअली मुझे थोड़ा जाना था, that's why I was अच्छा सर, ओके, श्योर सर। Now I think from my side also it is fine, so I think we'll meet again in second round. Yes. So then I will talk. Okay, thank you so much. Bye. All the best. सर 1 मिनट सर। Yeah. सर ISI के प्रॉब्लम में थोड़ा डाउट है Sir, you please हाँ talk. मैं करता हूँ, आप जाइए सर। सर वो लास्ट वाला प्रॉब्लम था ना कि प्रॉब्लम 8 UGB में, प्रॉब्लम 8, हाँ उसमें तो प्रूफ करना था कि either fx is linear and or fx is something property of fx, suppose something। तो मैंने प्रूफ किया था कि केस 1 लिया fx is linear, उसको प्रूफ किया। केस 2 लिया fx is not linear, देन सेकंड जो प्रूफ करना था उसको कॉन्ट्रडिक्शन लेके प्रूफ किया। तो ये वैलिड होगा क्या ये आर्गुमेंट? हाँ, अब बोलो इसमें क्या है। इसमें प्रूफ किया था, मतलब पहला केस लिया fx is linear, फिर उसको प्रूफ किया। देन केस 2 लिया fx is not linear, देन सेकंड जो प्रूफ करना था
तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन लेके प्रूफ किया। तो ये वैलिड आर्गुमेंट होगा? नहीं, पहले तुमने ले लिया एफ एक्स इज लीनियर, उससे प्रूफ कर दिया तुमने। हाँ, हाँ, उसके बाद केस 2 लिया, इफ एफ इज नॉट लीनियर तो देन नॉन लीनियर में क्या तुमने क्या लिया, मतलब डिड यू टेक अ पॉलिनोमियल ओनली? नो, मतलब जस्ट इफ इज इक्वल्स नॉन लीनियर लिया, उसको का फर्दर यूज नहीं हुआ एक्चुअली। इफ इज नॉन लीनियर, हाँ, मतलब इफ इज नॉन लीनियर लिया, उसके बाद मतलब जो प्रूफ करना था उसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ किया। ऑपोजिट स्टेटमेंट कंसीडर करके उसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ किया। कॉन्ट्रडिक्शन से मतलब उसमें तुमने प्रूव किया दैट डज नॉट एग्जिस्ट अ टी, हाँ, उस तरह। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ टी बिलोंगिंग टू 0 to 1, ये प्रूफ किया। हाँ हाँ ओके, एक बार सॉल्यूशन याद है तुम्हें? सॉल्यूशन से नहीं याद है अभी। हाँ, तो एक बार सॉल्यूशन अगर याद है, तुम अगर रिक्रिएट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, वो मुझे भेज दो, एक बार मैं चेक कर लूंगा। तो टेलीग्राम में भेजूंगा, सॉरी, टेलीग्राम में दूंगा। हाँ टेलीग्राम में मुझे भेज दो, अच्छा। ठीक है। तो एक तो सोल्यूशन कर लो, बिकॉज वो तुम्हारी कॉपीज जो होती हैं यूजीबी की पर्टिकुलरली, उनके पास होती हैं, हाँ, ठीक है। तो यू शुड नो व्हाट यू रोट, तो एक बार वो दोबारा से रिक्रिएट कर लो, अच्छा। ठीक है। ठीक है बच्चे, ओके बाय।